Good morning, everyone. Today, we will be discussing axes and planes. I will tell you before starting this session of the axes and planes. Even initially in the medical college, student take more time to understand because it's not that much easy. एक्सिस और प्लेन की जो हम बात करते हैं ना, तो शुरुआत में बड़ी मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं होता इसको समझना, लेकिन एक बार दिमाग में बैठ जाए फिर आसान होता है। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। इट माइट हैपन विद यू दैट यू माइट फील लिटिल डिफिकल्ट, बट डोंट वरी, यू कैन सी द वीडियो रिपीटेडली, अगेन और अगेन। आप वीडियो देखकर उसे आप चीज को, उस कंफ्यूजन को मिटा सकते हैं, राइट। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग एक्सिस एंड प्लेन्स, राइट। सो डॉक्टर निधि will be presenting this. So today we learn about the axis and planes. So axis and planes is a very important topic in the medical term. Okay. It is important while performing any movement, any activity. So the movement and activity is occur around the axis and in the plane. तो जो कोई भी मूवमेंट होती है वो एक्सिस के सराउंडिंग होती है और प्लेन्स के अंदर होती है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि एक्सिस क्या है और प्लेन्स क्या है। So I would like to give you one example. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। Let's see here. आपने देखा होगा कि गांव में एक एक कोलू का बैल होता है, कोलू का बैल। सो दिस इज द सेंटर पार्ट एंड अराउंड वो जो घूमता रहता है कोलू का बैल, द ऑक्स इज मूविंग अराउंड। You can see the ox is moving around. So this is the axis in the center. And where it's moving around, this is the plane. It is moving around in this plane, right? यानी जो एक कोलू का बैल होता है वो जिस लकड़ी के चारों तरफ घूमता है तो वो बीच की लकड़ी एक्सिस है, और जितनी जगह में घूम रहा है पूरी वो जगह प्लेन है, यानी एरिया, राइट। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल। फॉर एग्जाम्पल, you can see the door. आप ये डोर देख सकते हैं, you can see this door, right? This is the door. So I'm opening the door and closing the door. So axis means where the door is fixed, this area. Here a door is fixed, that is axis. Now door is moving in this area. This is the plane. तो प्लेन का मतलब क्या होता है कि प्लेन का मतलब वो सारा एरिया जिसमें घूमने की फ्रीडम है। जैसे किसी आपने घोड़े को रस्सी से बांध दिया तो घोड़ा कितनी जगह में घूम सकता है, वो पूरी जगह प्लेन है। प्लेन मींस सरफेस, ओके। सो फर्स्ट, मूवमेंट ऑफ द बॉडी अगर एट द जॉइंट, कोई भी मूवमेंट होती है हमारे बॉडी में वो जॉइंट पे होती है, तो जॉइंट के थ्रू ही मूवमेंट होती है। ये पता चला। अभी ये जॉइंट कैसे मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट एक एक्सिस पास होती है। तो अभी आप इमेज में देख रहे हो, हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट की बात करें, ठीक है। तो ये शोल्डर जॉइंट बन गया, दो बोन नजदीक आ गए, उन्होंने एक जॉइंट बना दिया, ठीक है। अभी इसमें से एक एक्सिस पास होगी, ठीक है। देखिए
ये ब्लैक कलर का जो स्पॉट है, दिस इज अ एक्सिस. सो दिस ब्लैक स्पॉट इज एक्सिस. ओके. सो फॉर अ मूवमेंट of the shoulder joint, there is a main axis which is the fix. Based on that, surrounding the axis, the movement is occur. पता चला, ये मूवमेंट हो रही है. तो इसमें इस बात को देखिए एक बार, जैसे ये मॉडल देखिए आप, लुक एट दिस मॉडल. You can see the shoulders fixed. So axis we can consider here, and this arm will move. So this is the plane, the freedom where it can move. So this is the plane. Axis will be fixed, and the plane means we'll tell, okay, flexion, extension, whatever we will tell, abduction, adduction. There are multiple movement might be there. They all are happening in the plane. Axis will be fixed like the shoulder, and the plane means we can see all the area where the movement is possible, right? So in this image you have seen on the shoulder joint, like shoulder will be fixed, but arm is having capability to move forward, backward. Arm can be moved in the multiple directions. So the axis will be going from this area, so this will be the fixed area. So we can see this is the movement, right? The movement when the bone of the arm is coming up, coming in the abduction, or any different movement. That is the area, that is a plane where movement is possible. Yeah. So this is the shoulder abduction. The black spot is the axis which passes anterior to posterior. मतलब आगे से जाके पीछे की ओर जा रही है. ठीक है, तो वो हुई एक्सिस, और एक्सिस के सराउंडिंग ही मूवमेंट हो रही है. ये देखिए, तो इसको एक्सिस बोलेंगे, और जो मूवमेंट हो रही है वो उस एक्सिस के अराउंड में हो रही है. तो एक्सिस का मतलब क्या हुआ? एक्सिस का मतलब हुआ कि वो फिक्स लाइन where the movement is happening, right? वो fixed line. So this line is from front to back. It's going front to back. So this is called axis, and where movement is possible, that is called plane. Okay. Now we talk about the planes. तो planes किससे बोलते हैं? तो plane it is a surface which lies at the right angle to and in which the movement takes place. तो जो planes होते हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल पे होते हैं और जिसके अंदर मूवमेंट होती है. ठीक है. प्लेन इज ए वन टाइप ऑफ सरफेस. एक सरफेस जैसा होता है, एक सरफेस पे ही मूवमेंट होती है. अभी आप समझ लीजिए कि पीछे जो ये वॉल है, ठीक है, वो मेरा प्लेन है. अभी मैं उस पे मूवमेंट कर रही हूँ. ये मेरा एक्सिस गया और ये मेरा प्लेन. ठीक है, ये मूवमेंट हुई, ये हुआ शोल्डर का अबडक्शन. ठीक है. अभी जब ये मूवमेंट हो रही है, एक्सिस तो अपनी जगह पे फिक्स है, पर ये जो पीछे प्लेन है इसको हम प्लेन बोलते हैं. ये वॉल है, इसको हम प्लेन बोलते हैं, जिसके ऊपर मेरी मूवमेंट हो रही है. एक सरफेस है जिसके अंदर मेरी मूवमेंट हो रही है. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्लेन. अभी प्लेन कैसे होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेन होते हैं. ठीक है, अभी हमने समझा कि ये प्लेन है. ठीक है, अभी हम ये मूवमेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो दोनों के लिए प्लेन अलग अलग होता है. जैसे ही मूवमेंट चेंज होती है, प्लेन भी चेंज होगा. ठीक है, अभी हम शोल्डर अबडक्शन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास ये प्लेन है. ठीक है, पर इसी में अभी हम शोल्डर फ्लेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि शोल्डर फ्लेक्शन
उसकी डायरेक्शन अलग है, उसकी मूवमेंट अलग है, तो उसके लिए प्लेन भी अलग होगा और एक्सिस भी अलग होगी। ठीक है, तो हमारे पास 3 प्लेन है, कोरोनल प्लेन, सजाइटल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। नाउ वी सी वन बाय वन द प्लेन्स। कोरोनल प्लेन बता दीजिए, अगले है। ठीक है, नाउ द कोरोनल प्लेन। तो कोरोनल प्लेन क्या होता है? कोरोनल प्लेन वो चीज है जो हमारी बॉडी को डिवाइड करती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब आगे फ्रंट पार्ट, एंड पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पोर्शन। ठीक है, तो अब हम साइड से देखेंगे कि ये जो कोरोनल प्लेन है वो यहाँ से पास होती है और यहाँ से कट करती है, तो हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर ऐसे दो में डिवाइड करती है। So look at here, because this term are very commonly used in the medical science, and we know that we are telling the front is yin, back is yang, right? So front is yin, back is yang. So we can divide the body. Suppose this is the body, like this is the body, right? So this is the front and this is the back. So what is coronal plane? Coronal plane means we are dividing like this. We are dividing from here. See. So this is the front. We are separating the front body from the back body. See. Now, so now we are telling front is yin and back is yang. तो हमने कहा कि ये yin हो गया और ये yang हो गया. We have separated the yin from the yang. So this is called coronal plane. Now we can see, okay, we can see this surface in the coronal plane, and we can see this surface in the coronal plane. So the coronal planes means this plane. When we divide the body in the two part, one is the front part and one is the back part, right? In this way. Is it clear? What is the meaning of coronal plane? Is it clear? Is it clear or not? What is coronal plane? Yes, clear. Everyone clear? कि coronal plane क्या होता है? कि coronal plane का मतलब है कि हमने शरीर को दो भागों में बांट दिया, बीच में से कट कर दिया. जैसे कि यहां से देखिए, हमने बीच में से कट कर दिया, right? And we already know, like when we are talking about the yin and yang, we are telling yin is very soft, like the yin is very delicate, like the breast is very delicate, heart is very delicate, lungs is very delicate, the yin is very delicate. And if we talk about the back part, back is very stronger, like the spine, so we can tap on the back, but we can't tap in the front. It's very sensitive. तो कहते हैं कि आगे का भाग बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा संवेदनशील. तो जब आगे को पीछे से अलग करते तो इसे कोरोनल प्लेन कहा जाता है. ये हमें पता होना चाहिए. Okay, so this was the explanation of coronal plane. Okay, so let's move to the next. So look at here in this image once again. Dr. Nidhi has explained this image to you, that when we are dividing the body in the two part, so we can see this is the front part. So we can see the front part of the body, and we also can see the back part of the body. So how we are thinking this is as a coronal plane, division by the coronal plane. Okay, this is as per the coronal plane. Okay, so this is the coronal plane. Let's see the next one. So now we are moving to the next image. Now we already aware. Please explain with this. So the कोरोनल प्लेन, उसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं हमारी बॉडी में? तो हमारा जो स्कल पोर्शन है उसके अंदर काफी सारे सूचर्स आते हैं. स्कल है वो बहुत सारे बोन को जोड़ के बनाया गया है. ठीक है, तो उसी वजह से जो स्कल का जो पोर्शन है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है और वो पूरा स्कल बनाता है. ठीक है, अभी इसमें डिफरेंट डिफरेंट सूचर्स आती है. ठीक है, तो फर्स्ट इज फ्रंटल सूचर.
तो देखिए इसमें देखिए ये जो फ्रंटल फ्यूचर है जिसे हम कोरोनल फ्यूचर भी कहते हैं, राइट? वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दिस फ्यूचर इन अवर स्कल्प एक्यूपंक्चर क्लास कि हमने बात की थी ये जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड फ्रंटल फ्यूचर और कोरोनल फ्यूचर, राइट? Why we are telling it coronal suture? Just we have discussed that we are dividing the body, the front, we are dividing the front body from the back body. हम आगे के शरीर को पीछे के शरीर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो सूचर का निर्माण होता है इसे हम कहते हैं कोरोनल सूचर, राइट? कोरोनल सूचर. So look at here in this image you can see like we are taking the something and we are dividing this front part of the body from the back. We are separating the front part of the body from the back. So this two division is done by in the coronal plane. ये coronal plane में हमने दो डिवीजन किए हैं, right? Now moving further, we see a sagittal plane. ठीक है, तो sagittal plane वो है, वो हमारी बॉडी में सेंटर ऑफ द बॉडी से पास होता है, डिवाइडिंग आवर बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स. ठीक है, तो sagittal प्लेन है वो यहाँ से पास होता है, यहाँ से पास होगा, पास होगा, पास होगा, पास होगा, फिर हमारी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट दो पार्ट में डिवाइड करेगा. ठीक है, तो ये हुआ sagittal. So sagittal suture means dividing our body in the right and left two halves, right? I will give you example. एक उदाहरण देखिए, ये sagittal suture का उदाहरण देखिए कि now look at one, this is the another body, right? So we are taking the example of sagittal suture. आपने सुना होगा एक कहानी की शिवाजी राव की तलवार में ऐसी ताकत थी कि उन्होंने जब उसको मारा था, किसको मारा था, तो पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे दो पार्ट में उन्होंने बॉडी के साथ घोड़े को भी काट दिया. किसी ने सुनी ये बात? सो व्हेन वी आर कटिंग द बॉडी लाइक दिस, टॉप टू बॉटम लाइक दिस, राइट? व्हेन वी आर कटिंग द बॉडी फ्रॉम द so when we are cutting the body like this from the center, so this is called sagittal plane. Now we can see this plane called sagittal plane from the top to bottom. तो जब हम शरीर को ऐसे टॉप टू बॉटम देखते हैं, अब sagittal plane की जरूरत क्या है? Suppose we want to see only one side. Now we can see one side. So we already know in the TCM also we are discussing the right is yin and the left is yang. So right part is having the right side of the body, left side is having the left side of the body, like right eye, left eye, right ear, left ear. So we can divide with the help of sagittal plane. हम sagittal plane के माध्यम से इनको divide कर सकते हैं. We can imagine with the help of sagittal plane. Yes. ठीक है, तो अभी उसको हमारे स्कल के सूचर के साथ कंपेयर करेंगे. तो जैसे हमने कोरोनल सूचर के बारे में पढ़ा था कि कोरोनल सूचर है वो हमारी बॉडी को डिवाइड करेगा आगे और पीछे की ओर. ठीक है, तो जो sagittal सूचर है वो हमारे स्कल में इस तरह से होता है, जो कि दिखाया गया है रेड कलर की बॉर्डर से. ठीक है, तो जो ये sagittal सूचर है वो हमारी बॉडी को डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट में. ठीक है, तो हम स्कल के ऊपर देख के समझ सकते हैं कि वो हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है. So sagittal suture is the suture, like we can see the right brain and the left brain are separate. Right brain is very creative brain. Right brain is the intuitive brain and right brain is the emotional brain. तो राइट साइड का हमारा ब्रेन इमोशनल होता है, इंट्यूटिव होता है, क्रिएटिव होता है, और लेफ्ट साइड का ब्रेन हमारा थिंकिंग और लॉजिकल कनेक्शन वाला होता है. लेफ्ट ब्रेन इज थिंकिंग एंड कनेक्टेड विद द लॉजिकल point of view. So now if we are thinking, the right is the separate and the left is separate, so we are dividing it in two parts.
सो दिस इज कॉल्ड सेजेटल suture. इसी का नाम भी सेजेटल suture ही है. सेजेटल suture. Sagittal suture. So the meaning of sagittal suture, who is dividing body in the two part, right and left. Look at here in this image. The right is separated from the left, that is sagittal. The division is called sagittal division, or now we are looking the sagittal plane. आप जब इस तरह से जो प्लेन देखते हैं वो sagittal plane होता है. मैं आपको एक चीज बता, I would like to tell you one thing here. So ऐसे करता है साइड में से ना, हाँ यहाँ से. Okay. So look at here. Where is the sagittal plane? कहाँ है sagittal plane? When we are separating these two parts, then this is the sagittal plane. ये है sagittal plane. आपने कहा मुझे sagittal plane देखना है. Okay, look at here. In the right sagittal plane, you can see the front body part as well as the back body part. Front will be here and back will be here. Front and back both. So front to back. Suppose this is the body. If you're dividing in from the center, there's the front part of the chest and the back part of the chest. So you can see entire. You can see entire front and back part both, right? This is the importance of the sagittal कि आपको पूरा का पूरा आधा पार्ट देखना है. Let's move to the next one. Now transverse plane. तो जो transverse plane which divides our body into upper and lower half. जो transverse plane है वो क्या करती है, हमारी बॉडी को ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में दो तरह से डिवाइड. ठीक है, तो दिस इज द transverse plane which divide our body into a two equal part, upper half and lower half. ठीक है, जैसे कि आपने देखा हम प्याज की स्लाइस बनाते हैं, है ना, स्लाइसेस ऑफ द सैलेड, slice of onion. Then how could we cut the onion? You can see this. How we are cutting the onion transversely. तो जो ट्रांसवर्स स्लाइसेस होती है ओनियन की वो क्या है, वो ट्रांसवर्स प्लेन ही तो है. Like look at this image, I will show you. So if you are looking this image, you can see these are the slices. हमने एकदम ट्रांसवर्स स्लाइसेस काट दी. So we are cutting horizontally, we are making multiple slices. This is called ट्रांसवर्स प्लेन. नाउ व्हाट वी कैन सी, अब हम देख रहे हैं कि हमें कितनी सारी रिंग्स दिखाई दे रही है. सेंट्रल रिंग, then the second ring, then the third ring, then the fourth ring. With all the rings can be seen only in the transverse plane. ये सारी रिंग ट्रांसवर्स प्लेन में ही देखी जा सकती है. I will give you another example. Look at here. To make it simple, suppose this is something body. So when we are cutting it transversely like this, right, like this, this is called transverse plane. Now we can see the like this, we can see from this is called transverse plane. तो जब हम ऐसी स्लाइसिंग करते हैं इसे कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन. सो हमने तीन प्लेन की बात की. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थ्री प्लेन. नंबर वन plane was coronal. The coronal plane was when we are separating front body from the back body. जब हमने फ्रंट शरीर को बैक से अलग कर दिया. Look at here. We have seen first. We are separating the front body from the back. This is called coronal plane. Right? Second, we have understood
when we are cutting the body vertically, cutting something vertical from the center, it is called sagittal plane. ये sagittal plane कहलाता है. And third, we have discussed making the slices, that is transverse slices, transverse plane. Purpose, we want to see this. Purpose ये देखना कैसा है. Onion, how many rings are there? So in this way, we have discussed three plane. How many people understood? How many people? कितने लोगों को समझ में आया? ये तीन प्लेन. Clear? Got it. Wonderful. Good, good. Wonderful. So understood. Wonderful. So now we're moving to the axis. Now you have to be very alert. Now the confusion will be created in the axis, not in the plane, right? So be aware, be alert, and try to learn the axis. Okay. So we can see here all the three plane. तीनों plane आपको दिख रहे हैं यहाँ पर. Frontal plane, we can see the front body from here and the back body on the back side. हमने कहा frontal. Sagittal, we are cutting the body from the right, from the left. And transverse, or we are making the slices. तो हमने तीनों प्लेन देख लिए. जब फ्रंट को बैक से अलग किया, फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन. फिर बॉडी को बीच में से शिवाजी महाराज की तलवार ने बॉडी को बीच में से कट कर दिया. That is sagittal plane, and the transverse horizontal making the slices. Three plane. Now we are moving to the axis. So the axis is the line about which the movement take place. Axis क्या होती है कि वो एक लाइन होती है, एक रेफरेंस लाइन होती है जिसके सराउंडिंग मूवमेंट होती है, जिसके थ्रू मूवमेंट होती है. ठीक है. तो फॉर एन एग्जांपल कि हमारे पास ये पेन है. ठीक है. इसको ये एक्सिस से पकड़ के रखना पड़ता है. ठीक है. तो इसको मूवमेंट करने के लिए एक एक्सिस चाहिए, तभी वो मूव करती है. तो एक्सिस का इंपॉर्टेंट ये है कि उसके सराउंडिंग रह के ही मूवमेंट होगी. अभी ये समझ लो कि ये पेन है, ये हमारी एक्सिस हो गई शोल्डर जॉइंट की. ठीक है. अभी इसने शोल्डर को यहाँ से पकड़ के रखा है, तो शोल्डर कहाँ पे मूव करेगा? इस डायरेक्शन में. ठीक है. तो शोल्डर के पास अपनी तीन एक्सिस है. ठीक है. तो वो डिफरेंट मूवमेंट में डिफरेंट एक्सिस करता है. Okay, so now I will also explain this once again here. What is axis, right? So look at here. Yeah. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी एक्सिस से बात करें? Sagittal axis से, right? We'll talk about the sagittal axis first. आपने सुना होगा एक राशि होती है सेजिटेरियस. सेजिटेरियस सुनिए, धनु राशि. 9th नंबर राशि. मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ राशि, सॉरी धनु राशि. क्या बोलते हैं? सेजिटेरियस मीन्स धनु बोलते हैं कि और कुछ बोलते हैं? Confirm if you know what is the meaning of Sagittarius. It's a dhanu or something else. Yes, धनु. उसका साइन देखा है कभी आपने? Have you seen the sign? I will show you the sign. So look at the sign here. Look at the sign of this Rashi in this image. कि धनु राशि, the Sagittarius sign. Look at here. This is the sign, right? Now someone is picking the arrow in the hands, right? और जब ये एरो जाएगा, जब ये एरो चला जाएगा,
कैसे अंदर घुसेगा बताइए। अगर किसी ने ये तीर चला दिया सामने से तो कैसे अंदर जाएगा बताइए। हाउ इट विल एंटर इन द बॉडी, कैन यू इमेजिन योर धनु? वंडरफुल। हाउ दिस विल एंटर इन द arrow will be entering in the body, how can you imagine? भेदता हुआ, I will show you one image. Even I don't like this image, but still I will show you this image for understanding purpose. Look at here. तो ये तीर कैसे जाएगा हमारे बॉडी में? ये देखिए ऐसे जाएगा. Just for understanding purpose, I don't want to spread violence. Just for understanding purpose, this arrow will go like this. This is called Sagittarius. This is called sagittal axis. Okay, इसी को कहते हैं. Now, whether we put the arrow in the forehead or in the chest or in the abdomen or in the shoulder, anywhere it will go front to back. कहाँ से जाएगा? आगे से पीछे जाएगा, front to back. Got it? So now we have seen this. We already have seen this. Where is our? I told you, शिवाजी महाराज की तलवार ने जब इसे कट किया, इसके दो पार्ट हो गए. So from here only this will go. This is the sagittal axis. ये कौन सी axis है? Sagittal axis. Now on the sagittal axis we have to remember where is the space. Only there our axis will fall. Because now whatever the movement, no, this is vertical, front to back. ये हमारी एक्सिस कहाँ है? ये फ्रंट टू बैक है. लेट्स सी. हाँ, दिस sagittal है. We are talking about the sagittal. Explain. What is? Yeah, share करना. Look at this. Explain. So, sagittal axis. The sagittal axis passes from front to back. आगे से पीछे की ओर जाएगी. ठीक है. अभी उसमें कौन कौन सी मूवमेंट होती है? तो शोल्डर अबडक्शन एंड अडक्शन. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कि शोल्डर अबडक्शन अडक्शन क्या होता है. ये है अबडक्शन, ये है अडक्शन, ये अबडक्शन, ये अडक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे एक एक्सिस आगे से पीछे जाएगी. ठीक है. मतलब एक्सिस क्या होती है कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है. कहीं पे हमने रॉड घुसा दिया या कहीं पे हमने सलिया डाल दिया. ठीक है. तो वो उस जगह को फिक्स कर देगा. तो एक्सिस इधर से जाएगी तो वो शोल्डर को यहाँ से फिक्स कर देगी, तभी ये मूवमेंट होगी. So look at once again here. Suppose I have given this example. हमने ये example दिया. We have divided the body in the two half. हमने बॉडी को दो हाफ में डिवाइड किया. एंड sagittal axis will go like, जैसे कि धनुष चला दिया, धनुधारी ने धनुष चला दिया. This is the sagittal axis. Now movement is possible, only this movement, this. Only this movement is possible. Abduction, adduction, abduction, adduction. तो जब हम बोलते हैं कि abduction कहाँ होगा? Sagittal axis पर होगा. Look at once again. Suppose you are putting the arrow here, like this. It's going. Now I can just move my hand like this, right? Because this axis will allow the movement, abduction and adduction. It's very difficult if I want to move like this. Because axis is going like this. Very big rod is going from here. I want to bring my hand front, it will block the path. ये सामने से गई है ना, it will not allow. But there is no any problem if I am doing this movement. We can take one more example.
कि हैंग वो होता है ना तार, कपड़े सुखाने का तार है ना, कपड़े सुखाने के तार में आपने कुछ कपड़े लटका दिए तो ऐसे से हिलते रहेंगे, हैंगर, हैंगर। बट इफ यू वांट लाइक दिस इट्स डिफिकल्ट, so there is only lateral and medial movement is possible. So when we talk about the sagittal axis, तो धनुधारी की का धनुष आपकी बॉडी में गया, शोल्डर में चला गया, now only lateral, only abduction and adduction is possible. Like if we talk about the legs, suppose someone is something coming here, so what movement we can do? We can do this movement. We can't do this movement. We can't do this movement because here is the rod, front to back, and very big rod, big rod. But this movement is easy. So this axis will support for doing this movement. So this is called sagittal axis, right? So sagittal axis means the axis who is going front to back, any movement, abduction, adduction will happen on the sagittal axis. केवल sagittal axis में ही संभव होगा. Let's proceed ahead. मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको ये वीडियो एक दो बार और देखना होगा, तब समझ में आएगा ढंग से. Okay, we are trying to make this subject easy, but anyway you have to see this, you have to repeat the video. Okay, so now let's move to the next axis. Yeah. Now frontal axis. Frontal axis passes from right to left और left to right. मतलब यहां से पास होगी तो लेफ्ट में निकलेगी, या लेफ्ट में से पास होगी तो राइट में निकलेगी. ठीक है. So the movement which is occur around the frontal axis are shoulder flexion and extension. ठीक है. तो उसमें क्या होगा कि अभी ये हमारे साइड में से इधर की ओर गई अंदर. ठीक है. तो ये शोल्डर फ्लेक्शन हुआ और एक्सटेंशन हुआ. ठीक है. इसमें अबडक्शन एडक्शन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट करेगा हमारी मूवमेंट को. जब हम अबडक्शन करने जाएंगे, वो रॉड वहां पे फिक्स है, तो वो अबडक्शन को अलाउ ही नहीं करेगा. तो फ्रंटल एक्सिस कौन सी मोशन अलाउ करती है, कौन सी मूवमेंट को अलाउ करती है? सो द फ्रंटल एक्सिस अलाउइंग ओनली वन मूवमेंट व्हिच इज अ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर. तो पर्टिकुलरली शोल्डर जॉइंट के लिए दिस इज helping to move the shoulder into a flexion and in extension. So look at once again here कि जहां हमने अभी अभी बात की थी, हमने बात की थी फ्रंटल प्लेन की. Frontal, we are talking about the frontal axis. So first come back to frontal plane. Okay. Frontal plane means we are dividing the front body from the back body. Okay. So all the axes are going from the division area only. Okay, this is the division. So let the axis pass from here. Right. So on the one side front, now why this axis is, because what is the purpose to divide the body in two parts? दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इसकी मूवमेंट कराना है. Right. So now we are dividing the body. Now we can see this movement is possible. Now we can take it front, we can take it back. This is called flexion. Okay. In the same way, this movement can be done. यानी अब ये दोनों movement possible. But there should be someone who hold this. जैसे दरवाजे को पकड़ के रखते हैं hinge, तो बीच में कोई होल्ड करने वाला होना चाहिए. So we have made the frontal plane, but in the frontal plane, movement is possible due to frontal axis. So frontal axis is responsible for bringing the front part front
and taking it back. Okay, even the back part. We can take the back part more back and bring front. So the movement is possible in the frontal axis. Let's see. Suppose if I'm talking about my shoulder, then I told you the frontal plane means slicing the body in the front and back. So one horizontal axis holding body. I can bring my hand front. I can take my hand back. That is called flexion, extension. Even same for the leg. I can bring my leg front. I can take my back my leg. So this movement is happening. Sometimes leg is going to the front side. Sometimes leg is going to the back side. So this movement is happening in the frontal axis. So frontal axis is the axis which is connecting right shoulder to the left shoulder. Right ear to the left ear. Right? Like this. Why? Because we have divided the body in the front and back. So we are holding from the center. Now do the movement. Flexion, extension, flexion, extension. Someone holding from the center. That is happening in the frontal axis. Let's see in this image. इस image में देखिए. You can see in this image how this is. Now, person want to bend the body front. Yes, can bend the body front. Person want to take the body back. Yes, can take the body back. हम आगे भी शरीर को मोड़ सकते हैं और पीछे भी मोड़ सकते हैं. यानी we will do this movement in the frontal axis. तो हमने दो एक्सिस की बात की. एक तो शिवाजी महाराज की तलवार, नहीं, एक तो धनुर्धारी की तलवार जो आर पार चली गई है ना, जो आर पार चली गई थी. फ्रंट टू बैक. So first we have discussed the front to back axis. Now we are discussing right to left axis. That is called frontal axis. Only three axes are there. So we have to try to understand this concept. Now let's talk about the last axis. Now, vertical axis. So, the vertical axis which lies parallel to the line of gravity. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ ग्रेविटी कैसे पुल करती है. तो लाइन ऑफ ग्रेविटी हमें नीचे की ओर पुल करती है. तो वर्टिकल एक्सिस है वो ऊपर से जाएगी और नीचे की ओर जाएगी. तो ये हुई वो वर्टिकल एक्सिस हुई. तो it is also called as, it is passes from top to bottom. इसको हम longitudinal axis भी बोलते हैं. ठीक है. It lies perpendicular to the transverse plane. So the movement which is occur around the frontal axis are shoulder internal rotation, external rotation and trunk rotation. ठीक है. तो जो शोल्डर की मूवमेंट हो रही है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, इट इज परफॉर्म अराउंड द फ्रंटल एक्सिस. पता चला. तो जो वर्टिकल एक्सिस है वो पासिस होगी ऊपर से लेके नीचे की ओर. So now look at this example here. See, the purpose of all axes is only one: to hold the structure and doing the movement. So we already have discussed this transverse plane, right? We already have discussed this transverse plane. I am making multiple slices. The question is, how will I hold these slices at one place? How will I hold these slices at one place?
So I will pass one axis from the center. So this axis is, what is the possibility here? अब हम क्या कर सकते हैं? Now this axis, because of this axis, this can rotate. Definitely there is a not forward backward movement is not possible. Side movement is not possible. But rotation is possible. So this is called vertical axis. Simple vertical top to bottom. Like if you see the vertical axis, if you imagine the vertical axis in the human body, what we can do? In the vertical axis, we can rotate anything we are rotating. Rotation is possible. Like I am rotating my head. Where I am rotating? In the vertical axis. So only three axes we have to keep in our mind. The third and the last axis, that is called vertical axis. Vertical axis is holding this structure in the place. तो वर्टिकल एक्सिस का मतलब है इनको उनकी जगह होल्ड करके रखना ताकि ये रोटेशन किया जा सके. तो आप इस इमेज में देख सकते हैं. अब आप इस इमेज को देखिए वापस. In this image you can see this is the vertical axis, how it's going top to bottom. आप देख सकते हैं कैसे ये ऊपर से नीचे जा रहा है. The purpose to hold this transverse slices. What movement is possible? Rotational movement is possible. Whether the internal rotation, trunk rotation, all the rotation. Rotation is possible. Look at me. I want to rotate my body. I want to rotate. Okay, so this rotation is possible. Not only this, any rotation is possible on the, someone is there in the center, so I can rotate. It's a holding. एक्सेस का मतलब है कि दरवाजे के हिंज जो पकड़ के रखें ताकि आप मूवमेंट को कर सकें. एनीथिंग यू आर डूइंग रोटेशन, that is vertical axis, right? I hope ये combination, I hope it's clear little, but I will tell you very frankly, if you are understood little, 50% means you are super intelligent. अगर आपको 50% भी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि एक्सेस को समझने के लिए बड़ी मेंटल एक्सरसाइज करनी होती है, राइट? Fine. So thank you so much, everyone. We will be continuing the session tomorrow with a more discussion. Thank you so much, Nidhi. Thank you so much. See you tomorrow. Have a blessed day. Bye.